So before we begin, I'll just give you a small introduction about me and Dr. Sakshi. So my name is Dr. Soumya Kine. I'm a cardiovascular and pulmonary physiotherapist. I've done my bachelor's under NUHS and my master's from KLE Institute of Physiotherapy, Belagavi. Over to you, Sakshi. Uh, Hi, my name is Dr. Sakshi Chilwant. I have completed my education in musculoskeletal physiotherapist, and I have done my master's from BK Patil College of Physiotherapy, MUHS. So the agenda for today's seminar or the webinar is we will be understanding about the PG entrance exam. What are the preparation strategies? How do you manage the time between the exam period, like for the studies also and for the exam also, like how to solve the mock test or how to practice for the same, and choosing the right college or the institute. So first thing first, so when you decide to go ahead in your career, so first thing your comes in your mind, which is why do you need to do masters, right? So uh, as this is not the main topic for today's webinar, but as many of you have come up with the inputs that we want to know about the career paths for the PT after masters, so we have included this and we'll give you the short introduction about why you need to do masters. So if you are considering masters for the academics, like you are interested in academics, masters is must. And other clinical practices like Dr. Soumya will also explain this in more detail. So it is very important to have you with a master's degree. Over to you, Soumya. So as Sakshi was telling you कि आपको मास्टर सिर्फ तभी करना चाहिए अगर आप रिसर्च में और and you're interested in studying further in whatever field of choice you choose. So that is the only thing कि अगर आप clinical कर रहे हो और academics करने का plan कर रहे हो, so then master's degree is important. But the other career paths we have mentioned here, like freelancing, tele-rehab, content creator, health coach, ergonomist, all of these do not need a master's degree. You can just do a few basic workshops or courses and get into other paths. But if you are planning on doing your master's, then it is required अगर आप academic में जाना चाहते हो and if you want to enter in your clinicals. So these are a few career options as a physiotherapist which you can look. क्योंकि आप में से काफी जनों ने पूछा था कि scope क्या है physiotherapy का and all of this. So this is what From our possible side. options are. Now the next main important question is your field of choice and college of choice कि हम कैसे चूज करें कि कौन सी फील्ड में जाना है एंड कौन से कॉलेज में जाना है. तो फर्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल टुडे. बिफोर देयर वर ओनली 4 possible options, that is your orthopedic, cardiorespiratory, neurology and CBR. But right now you can pursue your masters in sports, pediatrics, geriatrics, oncology. So there is a wide variety which is available for you to choose from. So the first thing which will come to your mind is your personal strength and skills. आप में से काफी जनों को एक लाइकिंग होगी कि मुझे ऑर्थो पसंद है या मुझे कार्डियो पसंद है. सो दैट इज द क्रक्स बिकॉज जो जिस चीज की आपको लाइकिंग है वो आप ज्यादा अच्छे से करोगे. योर पर्सनल पैशन विच इज द थिंग विच विल हेल्प यू ड्राइव towards choosing your field of choice. Second thing is your interest and passion developed during internship. Now we have a lot of undergraduate students also with us, so for them I am telling कि आप wait करो जब तक आप internship में नहीं पहुंचते हो. Internship is the time where you are actually interacting and dealing with the patients. So that time you will understand better कि where your curl lies, what field you are liking, whether orthopedics or ICU physiotherapy or neurophysiotherapy. So that is one part जहाँ पे आपको help होगा choose करने में कि कौन सा field हमें choose करना चाहिए. Third thing is your long term career goals. आप फ्यूचर में क्या करना चाहते हो. अगर आपको एकेडमिक में जाना है सो रिसर्च इज अ मस्ट फॉर यू. तो अकॉर्डिंगली आप वैसे डिसाइड करोगे आपके जॉब मार्केट डिमांड क्या है, विच लोकेलिटी आर यू गोइंग टू बी इन. तो डिपेंडिंग कि आप रूरल एरिया में हो या अर्बन एरिया में हो उसके हिसाब से जॉब अपॉर्चुनिटीज डिफर करती है. सो आप अपना करियर गोल्स उस हिसाब से ही अलाइन करो एंड वो फील्ड उस हिसाब से चूज करना स्टार्ट करो. कॉलेज ऑफ चॉइस के बारे में साक्षी विल टेल यू. Right. So as we cannot provide you the exact colleges for like personally, we cannot suggest you this college will be best for you. These are just the guidelines we are providing you to choose what is best for you. So first thing first, that is mentorship and guidance. So there will be no lectures in masters. So कोई भी ऐसे आके आप लोगों को सिखाने नहीं वाला है. Lectures will not be there. So mentorship
that is like who is going to be your guide is going to play a very important role in research. And clinical exposure and experience, when it comes to clinical exposure, so आपको ये ध्यान में रखना है कि आपका कॉलेज अगर हॉस्पिटल से कनेक्टेड है और मेनी ऑफ द हॉस्पिटल से एफिलिएटेड है, then it will be better for you for the clinical exposure also and experience wise also. Then there are some universities which will be out of Maharashtra. Like if you are going for the that thing, then you have to keep in mind that there will be a language barrier. So वहां पे जो भी population रहेगा for the patients, they are going to be of a different language. So आपको communicate करने में some amount of difficulties will be there, so you have to keep in mind same thing. And as for like as for our knowledge, we also know that for MUHS there will be like there will be a fee structure for the colleges, Correct. so which will range from like 1.5 to 3 lakhs. So for that also, if you are going out of Maharashtra and not opting for the like opting for the deemed universities, then the package will be like more. So you High. have to keep in These mind universities कि have a आपको higher अगर fees. yes, there will be higher fees. Then fourth thing, that is thorough research you have to do. Like whenever you are opting for certain college or university, you have to be in connection with the staff or the alumni. So आपको best feedback जो भी देने वाले हैं वहाँ के alumni सबसे best आपको feedback देंगे. So you can connect with them on LinkedIn, और आपके जो seniors है उनके friends or anything like that, you have to connect with them, and then you have to decide like this college will be best for me. Okay, so next thing is exam pattern and the syllabus. So, as far as PGP CET, which is under MUHS is concerned, this will be the online mode of examination. So, many of you will like सबको ऐसे लग रहा रहेगा कि तुम लोग को डायरेक्टली जाके पेन पेंसिल से करना है, ऐसा नहीं है. ऑनलाइन मोड इज देयर एंड देयर विल बी नो नेगेटिव मार्किंग. There will be 100 questions you have to solve on point, and this will consider include 4 points. That is, you will have a certain syllabus, that is from first year to fourth year syllabus will be included. There will be no research questions or the research based question in PGP CET, and the I will important just topics you add a have to small focus. point here. Yes. For PGPCET, which is there in MUHS, there are no research-based questions. But if you're opting for other exams like your Manipal or other university exams, they do have the research question. So I suggest that whichever exam you are giving, you go online on their official website. There is a curriculum or syllabus which is there. तो आप वो syllabus रेफर करो एंड उस हिसाब से पढ़ाई करो. सीईटी के लिए रिसर्च बेस्ड क्वेश्चंस नहीं है, पर मणिपाल और बाकी एग्जाम्स के लिए है. रिसर्च बेस्ड क्वेश्चन से सिंपल, मतलब काफी जो आपने इंटर्नशिप में पढ़ा है वही होता है आपका, सैम्पलिंग डिजाइन टाइप्स ये वो, बट देन इट इज स्टिल देयर. सो यू शुड जस्ट स्टडी अबाउट इट. मेक श्योर दैट You यू have विजिट to, द वेबसाइट एंड गेट द सिलेबस अपडेटेड जो भी है. right. So, every year there will be a brochure which will be published by CT cell of Maharashtra CT cell. So this is for 2023. They will provide you every information which is regarding the exam like PGP CET. So this is the rough idea. दिस इज मतलब यही एक सिलेबस पैटर्न बहुत सालों से फॉलो हो रहा है. एंड एज यू कैन सी द मार्किंग सिस्टम विच इज देयर, यू हैव टू like concentrate on the topics which are more of a weightage and which are your expertise. Like over to you, Dr. Soumya. सो एज यू कैन सी साक्षी ने ये जो इमेज डाला हुआ है दैट टेल्स यू कि आपका 100 मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा हुआ है, विच सब्जेक्ट हैज हाउ मच मार्क्स इन द एंटायर 100 मार्कर syllabus or paper which Hmm. you have. So the subjects which we have put here, your physiotherapy related subjects, that is your exercise therapy, electrotherapy, biomechanics, physical diagnosis and skill, physiotherapy in ortho, cardio, neuro and orthopedics. ये जो आपके फिजियोथेरेपी रिलेटेड सब्जेक्ट्स है ना, दे फॉर्म द क्रक्स. आप अगर कैलकुलेट करोगे तो 65 to 70% ऑफ द मार्क्स आर इन दीज सब्जेक्ट्स. तो वेनेवर आप आपका स्टडिंग टाइम भी डिवाइड करते हो, वेटेज ऑफ सब्जेक्ट्स डिवाइड करते हो, डू इट अकॉर्डिंगली. सच कि अगर आपने फॉर एग्जाम्पल आपने सोचा कि मुझे एक महीने में मुझे कवर करना है, तो आपके 2 weeks शुड बी फॉर दीज क्रक्स सब्जेक्ट विच आर गेनिंग यू 70% ऑफ द मार्क्स. रेस्ट आपके जो क्लिनिकल सब्जेक्ट्स है, ये फार्मेकोलॉजी, पैथो, माइक्रो, उनके भी क्वेश्चंस आते हैं, बट दैट इज अ 25 to 30%. सो आप
2 weeks in major subjects को देना चाहिए, 1 week to the clinical subjects and last 1 week for revision. So you should divide your time accordingly. You weigh कि कितना weightage में मतलब which subject is offering you more marks, you have to cover. The subjects which we have mentioned here are those कि आपको ये तो करने ही है, you must do it, and rest of the subjects you can give lesser time and just go through it faster, because that will earn you only 25% of the entire 100 marks which is there. Right. Next thing is study material. So there are different books which are available in the market. So mostly your seniors will guide you for the Suraj Kumar and PP Mohanty for PGP CET examination, not for the other university examination, but for the specifically PGP CET. Just the drawback for these two books are like these are like good books. They have good questions, but only the drawback is there could be a like प्रिंटिंग मिस्टेक एंड मेनी ऑफ टाइम्स यू मे फाइंड कि वहां पे कुछ कुछ क्वेश्चंस के जो आंसर्स है वो मतलब गलती से प्रिंटिंग गलत मिस्टेक मार्क से हुआ और है, व्हाट हाँ. यस गलत मार्क हुआ है सो दैट विल गिव यू लाइक which explains that this is not the gold standard for your like preparation. You need some like reliable source or the material for the examination, so you have to keep in mind while solving these questions also there are some questions which will not have the correct Be answer wrong, in these हाँ. So books. don't blindly follow the answers, just make Right. sure कि आप जो कर रहे हो वो सही है. Just discuss it with other people and then make sure that it is correct. There Yes. are a few wrong answers which are there. But for now that like these are good books, but you have to keep in mind Yeah. that thing. Second thing Next is is your apps. There are certain apps which are there which will help you solve your answers. There are apps which give you time-bound practice, so you can use those. There are some apps which like Teach Me Anatomy and all, which will give you a brief overview of the entire subject. So you don't have to go and read through all of the books. So you can use them for your preparation as well. Third thing is the test series. I would urge all of you to stay till the end. We have certain exciting announcements regarding the test series coming up. But what we personally feel is test series play a very important role in your exam preparation. The more number of questions you are solving, the more idea you are going to get that what sort of questions will be asked. There is a fixed pattern of all the universities in asking questions. They do not ask you any random line from any book. There is a concept which is there behind it. So the test series will basically help you know that what type of concepts are being asked. So the more you solve, you understand कि आपको पढ़ाई किस तरीके से करनी है. Coming to other coaching institutes, there are people and there are organizations or companies available who will help you with your PGP CET preparation. उनका ऐसा होता है कि in a 3 months time they will try and cover up the entire 4 year syllabus. But we feel that it is a bit expensive and overly charged, because paying 40,000, 60,000 for something which you have already learned in all of these 4 years is not required. So आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है. How you are supposed to study, you don't have to open anatomy and start reading BD Chaurasia. You have to solve more amount of questions जिससे आपको पता चले कि what you have to do. So I don't think that you need someone to teach you again whatever you have learned in the 4 years. You just need more amount of test series and more question answers to practice and solve. right. Yeah. So Time this is management. a main important point, that is time management. So there are two parts of it, that is first is exam point of view and studying or preparation point of view. So as far as PGP CET is concerned, you will get 1 hour and 30 minutes to complete the like test for the PGP CET, out of which you, like if you calculate you will get 90 minutes to complete 100 questions. So अगर आपके पास 90 minutes है and you are going for the online exam, so you have to like take this in consideration that 5 minutes आपके पहले के and 5 minutes in the end, you have to consider them to be for the correction thing and the like adjustment or any of the computer issue that happens. There will be a team which will help you to like sort it out, but वो 10 मिनट आपको पकड़ने पड़ेंगे. Then you have only 80 minutes to solve 100 questions. As there is no watch allowed, there will be a clock on your screen, and you have to like solve the
80 minutes in 100 questions in 80 minutes, you have to divide it in certain time, that I have to give this much time to each question. Again, there is a trap. जब आप लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हो, when you tick mark the question, there is an option, you have to select the answer and again you have to save the answer. So if you don't save the answer and you go further to the next question, this question will not be counted as a one. So you have to select the answer also and save it, then only it will be counted. So आपको ये भी ध्यान में रखना है कि अगर आप कुछ क्वेश्चंस को फॉर थिंकिंग प्रोसेस अगर बाजू में रख रहे हो, यू हैव टू बी लाइक यू हैव टू बी कॉशियस अबाउट दिस, कि अगर वो क्वेश्चन आपने वापस अटेम्प्ट नहीं किया तो that will not be counted. So Correct. we suggest you to take more time on that question only and go further. Like it will be your completely your choice, but we suggest you to take like time on that question only, save it and go further. Only 5 or 4 questions you can take, like कि हाँ इसको वापस आके देखेंगे and इसको वापस solve कर सकते हैं, इस पे time ले सकते हैं. But we suggest you to go ahead with this strategy. Over to you, Dr. Somna. जैसे कि साक्षी ने कहा, सिर्फ आप जो क्वेश्चंस अनश्योर है थोड़े बहुत 4-5, यू कैन कीप देम, जो लास्ट 5 मिनट्स है आप वापस आके उनको रिव्यू कर सकते हो एंड यू कैन मार्क. नाउ पीजीपी सीईटी ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से दिस इज वेरी करेक्ट बिकॉज देर इज नो नेगेटिव मार्किंग. बट अगर आप बाकी एग्जाम्स देख रहे हो जैसे कि मणिपाल है, तो वहां पे देर इज अ 200 क्वेश्चन एंड देर इज 4 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन, सो द टोटल इज 800 क्वेश्चन एंड देर इज नेगेटिव मार्किंग एज वेल. तो आप तुक्का मारने वाला आप वहां पे नहीं यूज कर सकते. सो जिसका भी जो भी सिलेबस है आप पहले से ही यू मेक श्योर दैट यू नो कि आपके पास कितना टाइम है, आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, उस हिसाब से पहले 5 मिनट लास्ट 5 मिनट आप निकाल दो एंड देन बीच का टाइम आप यूज करो. नाउ स्टडिंग पॉइंट ऑफ व्यू कि पढ़ाई का टाइम हमें कैसे डिवाइड करना चाहिए, तो सबसे पहले तो आप जैसे भी पढ़ने वाले हो, आई थिंक यू शुड मेक 2 स्लॉट्स एवरी डे. वन विल बी फॉर सॉल्विंग योर एमसीक्यूज एंड सेकेंड वन विल बी फॉर स्टडीइंग. इफ यू आर डूइंग मॉर्निंग 1 आवर इवनिंग 1 आवर, आप उसको वैसे डिवाइड करो. या फिर अगर आप एट अ स्ट्रेच 3 आवर्स बैठ रहे हो तो 1.5 घंटा आप एक चीज को दे रहे हो, सेकंड दूसरी चीज को दे रहे हो. तो नेक्स्ट स्लाइड वी विल टेल यू कि आपको कैसे अप्रोच करना है while solving your MCQs or while studying for that matter. So first important thing is MCQ solving on a daily basis. Now a method which we adapted and we found it to be very relevant is, जैसे मैंने कहा कि आपको बुक्स खोल के नहीं पढ़ने बैठना है. एमसीक्यू सॉल्विंग पीजीपी सीईटी पॉइंट ऑफ व्यू से, जैसे उसने कहा कि आपको 80 मिनट्स में 100 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, तो आप डेली मुझे लगता है आपको 50 क्वेश्चन लेने चाहिए. So 50 questions you take and solve in 40 minutes. So आपका first slot of study is you will be solving your MCQs in 40 minutes. Now out of those 40 minutes, whichever questions you have marked right is anyways right. मतलब आपको वो सही आने ही वाले हैं क्योंकि आपने खुद से मार्क किया है. जो जो आपके गलत गए हैं, on that you should make notes. For example, this is a question that is your wavelength of UVA. Now electrotherapy आपने first second year में पढ़ा होता है, so it is a rusty and this is a theoretical question, so you are bound to get it wrong. So what you do, you open up a notebook, you write down UVR, you write down UVA का frequency, wavelength, UVB, UVC, आप उसको note down करो तीनों का, and this will be a combined notes. तो एग्जाम के एक हफ्ते पहले जब आपको पता है कि आपको रिविजन करना है, यू कैन नॉट सिट एंड स्टडी योर एंटायर सिलेबस, यू कैन नॉट रिवाइज ऑल ऑफ योर बुक्स. सो दिस बुक विच यू हैव मेड, अपने एमसीक्यू पढ़ने से बनाया हुआ है कि जो जो मेरे कॉन्सेप्ट गलत गए हैं वो आपका सारा एक बुक में आ जाएगा एंड एग्जाम के पहले आप इस बुक में से रिवाइज कर सकते हो. तो आपने जो सुबह में एमसीक्यू सॉल्व करे उसमें से जितने आपके गलत हुए, शाम में आपने उस सारे के कंसेप्ट पढ़ लिए एंड यू मेड अ कंसाइज नोट्स आउट ऑफ दैट इन योर नोटबुक. तो ये आपका फाइनल नोट्स है जो आपको एग्जाम के पहले रेफर करने में अच्छा हो जाएगा. सो दिस इज वन वे ऑफ सॉल्विंग योर एमसीक्यू. टाइम बाउंड प्रैक्टिस आपका इसलिए जरूरी है क्योंकि आप अगर खुद से ही सॉल्व कर रहे हो, यू डू नॉट अंडरस्टैंड कि कितने टाइम में आपने सॉल्व किया. अगर आप पहले से ही और रिस्ट्रिक्टिंग योरसेल्फ कि मुझे इतने टाइम में ही इतना सॉल्व करना है, वो अपने आप एग्जाम में इट विल फ्लो इजीली. So these two are important things which you should focus on, that is solving MCQs and then studying that concept in a better format from your books. Right. नेक्स्ट थिंग इज स्ट्राइकिंग द बैलेंस. सो जैसे कि डॉक्टर सौम्या ने हम लोग को समझाया कि देर इज अ इम्पोर्टेंस ऑफ राइटिंग सम पार्ट और स्टडिंग सम पार्ट एंड एमसीक्यू सॉल्विंग, बोथ का एक बैलेंस होना बहुत जरूरी है जब यू हैव स्टार्टेड स्टडिंग. So there are 4 parts I want to explain on which like you will get an idea कि
तुम कैसे तोड़ोगे इस चीज को, लाइक फॉर स्टडिंग ऑल्सो एंड फॉर द एमसीक्यू solving also. So if you have like solved 50 questions and you have certain 5 topics of theoretical concept, so अगर आपके पास कुछ टॉपिक्स ऐसे होंगे जो आपको समझने हैं, फॉर एग्जाम्पल मतलब कोई बायोमैकेनिक्स का थिंग हो गया, देन लाइक लेंथ टेंशन रिलेशनशिप हो गया, ये सारी चीजें समझने की है, यू देयर इज अ कॉन्सेप्ट बिहाइंड इट. एंड सम पार्ट विल बी लाइक फॉर एग्जाम्पल यूवीआर का जो रीजन लिया था हमने मेमोराइजेशन पार्ट. एग्जाम्पल, लाइक तो वो पूरा थियोरटिकल है, आपको लर्न ही करना पड़ेगा. वो यूवी एक का मतलब फ्रीक्वेंसी इतना है, वो आपको लर्न ही करना पड़ेगा, उसमें कुछ लॉजिक नहीं है. So there will be two parts. So for learning part, like to understanding part, वो एक बार आपने समझ लिया, that will be easier to understand you next time. तो आपको उसको वापस वापस रिवाइज वो चीज को नहीं करना पड़ेगा. बट जो लर्निंग पार्ट का जो चीज है, उसको आपको रिपीटेडली यू हैव टू रिवाइज एंड रिपीट इट टू like retain for the longer duration. So for that, we suggest you to go for the revision techniques like audio recordings. You can just record your in your own voice. कि अगर आपने एक इलेक्ट्रो का पोर्शन है, उसमें ये कॉन्सेप्ट है, फॉर एग्जांपल यूवीआर है, तो आपने यूवीआर के सारे कॉन्सेप्ट लिख दिया. फिर अगर लो फ्रीक्वेंसी, मिड रेंज फ्रीक्वेंसी, हाई फ्रीक्वेंसी, इसके वैल्यूज लिख दिया, जो भी न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट है, इसका आप रिकॉर्डिंग्स बना लो. एंड वाइल गोइंग फॉर अ वॉक, और आप खाना खा रहे हो या अदर थिंग्स वट एवर यू आर डूइंग, वो टाइम पे आपको अगर ये सुनने मिलता है, देन इट विल बी अ इजियर टास्क टू रिवाइज. सेकेंड थिंग, अगर कुछ कॉन्सेप्ट जो भी समझने के जो मैंने बोले अभी, तो वो उसके लिए यू डोंट हैव टू गो अगेन एंड टू द बुक्स एंड learn it. There are some videos which are available. You can go for them, or you can opt for them and understand this. अगेन, जब आप बुक्स से पढ़ाई कर रहे हो, कुछ चीजें होगी जहाँ जहाँ पे आपको जाके बुक्स से ही रेफर करना पड़ेगा. यू हैव टू स्टडी दैट पोर्शन. सो फॉर दैट देर इज अ टेक्निक कॉल्ड पोमोडोरो टेक्निक. यू कैन ऑप्ट फॉर दैट. दिस टेक्निक विच सजेस्ट दैट कि आप बर्नआउट नहीं हो जाए फॉर लॉन्गर पीरियड. आप 1 घंटा मतलब एग्जाम का प्रिपरेशन कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, और बर्नआउट हो गए. दैट इज नॉट द थिंग हियर. यू हैव टू divide. Normally humans are like concentrated to the 25 minutes of slot. So you can study for the 25 minutes, you have to take 5 minutes का break, and again you can go further to the studies. So जो 5 मिनट का ब्रेक है, उसमें आपको मोबाइल नहीं देखना है. You have to go for a walk, or you can listen to the music or anything else, but आपको सोशल मीडिया पे नहीं जाना है. This will be also a task for your brain. And if you follow this pattern, so there will be your like concentration levels will be maintained for the longer duration. So आप 2 घंटा भी पढ़ाई कर रहे हो, तो उसके बाद आपको ऐसे नहीं लगेगा कि मैं ड्रेन आउट हो गई हूँ या हो गया हूँ. एंड लास्ट थिंग विच इज देयर, that is active learning, not passive. So many of times this happens कि हम लोग बहुत ज्यादा पैसिव लर्निंग में चले जाते हैं. हम लोग पढ़ रहे हैं, कुछ समझ नहीं रहा है. So there is a thing we have to consider that if we divide topics in like from in friends, मतलब कुछ 5 लोग हैं, 5 लोग ने 5 टॉपिक्स लिए, एंड दे हैव कम अप विद द आइडिया दैट आई विल टीच यू. And like for that also you can make a WhatsApp group. We also have made WhatsApp group. In that also you can join, you can ask question. As a community you can help each other also. We will also help you in that also again. And if you explain certain things, so that will be a part of active learning. So जब आप किसी को समझाते हैं एक पॉइंट ऑफ व्यू, तब आपके मतलब मेमोरी में वो लॉन्गर ड्यूरेशन के लिए आपको समझ में रहता है, और आप you'll be very like used to it. So that we suggest from this slide. सेकेंड बेनिफिट इसका ये है कि यू आर डिवाइडिंग द थिंग. आप खुद जो 5 टॉपिक पढ़ने वाले थे, आपको 5 दिन लगते, बट नाउ यू हैव डिवाइडेड, तो एक दिन में आप 5 अलग अलग टॉपिक सीख रहे हो. सो इट इज कॉस्ट मतलब टाइम इफेक्टिव ऑल्सो, एंड द लर्निंग इज ऑल्सो मच बेटर. दैट इज Right. अ गुड पॉइंट. Okay, now how to approach your MCQs in exams. So सबसे पहले चीज तो है, you should read your questions carefully. For example, यहाँ पे the following are seen in COPD except. Now the terms like except, not, without, or, these completely reverse the meaning of the question. So it is important कि आप question अच्छे से पढ़ो कि उन्होंने क्या पूछा है, what is there or what is not there. तो and then you go for eliminating your options. जैसे कि इसमें से COPD में क्या क्या नहीं होता है ये पूछा है. So for pulmonary
Core pulmonary is something which is there in right-sided heart failure, so right ventricular hypertrophy. Now, if you know your right side of the heart and lungs are connected, so of course आपके lungs में अगर कोई problem है तो वो right side of the heart को affect करेगी. So core pulmonary is seen in COPD. Pneumothorax, COPD में emphysema होता है. There is air-filled bullae which is there. So because of the destruction of the lung tissue, there will be some sort of air which leaks into your pleural space. So pneumothorax will also be there. Hemoptysis प्राइमरीली सीओपीडी में नहीं दिखता है, बट टीबी केसेस में दिखता है. इन क्रॉनिक सीओपीडी हेमोप्टिसिस इज सीन. सो द ओनली रिमेनिंग ऑप्शन इज योर अप्लास्टिक अनीमिया. अप्लास्टिक अनीमिया, अनीमिया होता है सीओपीडी में बट अप्लास्टिक नहीं होता है. सो अप्लास्टिक अनीमिया इज समथिंग जहाँ पे your RBCs or your bone marrow is not able to produce your blood cells, so that is not seen. So before you approach a question, आप पहले तो एलिमिनेशन टेक्निक सीख लो एंड सेकेंडली यू रीड ऑल द ऑप्शंस थ्रू. काफी बार एक्साइटमेंट में ऐसा होता है कि ऑप्शन ए है, हमने मार्क कर दिया, बट देर आर मल्टीपल करेक्ट आंसर्स, ऑल ऑफ द अबव या बोथ बी एंड सी. सो यू हैव टू लुक एट दैट ऑल्सो. यू रीड ऑल द क्वेश्चन, एलिमिनेट द पॉसिबल आंसर्स एंड देन मार्क योर करेक्ट आंसर. जस्ट डोंट इन द एक्साइटमेंट आप पहले से ही मत मार्क करो. And these techniques you follow even while solving during your preparation part. ऐसा नहीं कि आप डायरेक्ट एग्जाम में कर रहे हो, वो पहले से ही आपके बिहेवियर में वो इनकॉर्पोरेट करना है. Right. This was one technique, and other technique which can be followed as, for example, the question is pointing index is a sign of lesion of. तो अगर आप ऐसा क्वेश्चन मतलब देख रहे हो जहाँ पे डिफरेंट नर्व्स का डिफरेंट कंडीशंस हो सकता है, यहाँ पे आपको समझ में आ गया कि अगर पॉइंटिंग इंडेक्स है तो ये रिलेटेड टू मीडियन नर्व है. बट देन यू कैन मेक नोट्स. व्हाइल मेकिंग नोट्स आल्सो यू कैन कंसिडर दिस टेक्निक कि अगर आपके पास 3 कॉन्सेप्ट्स आ रहे हैं, एक ही क्वेश्चन में आपको 3 चीजें मिल रही है, व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चन आल्सो यू हैव टू कीप इन माइंड अल्नार नर्व का क्या हो सकता है, क्लॉ हैंड है, रेडियल नर्व का क्या हो सकता है, रिस्ट ड्रॉप है, देन मीडियन नर्व का क्या है, इंडेक्स फिंगर है. देन यू हैव द आइडिया कि हाँ, एक एक क्वेश्चन का इज ऑल्सो अ फर्दर क्वेश्चन, मतलब इससे भी एक क्वेश्चन बन सकता है. नॉट नेसेसरी अगर ये 2020 में ये क्वेश्चन आया है तो 2024 में आपको अल्नार नर्व का क्लॉ हैंड पूछ सकते हैं. सो यू हैव टू कीप इन माइंड कि ऐसे यू हैव टू अप्रोच फॉर द क्वेश्चन, आइदर द एलिमिनेशन और द like exploring thing. So So two in this techniques you have technique, to consider. one question में you learn 4 different concepts. So you Right. made note of ulnar nerve का ये होता है, radial nerve का ये होता है. So आपने पढ़ा एक ही question but आपने 4 अलग concepts revise कर लिए. तो ये studying के time पे आपको helpful होगा. Next thing which is very important, that is keeping yourself updated. As per our like our knowledge, PGPCET के लिए this is the latest circular which has been published on the ctcell.maacet.org, which announces PGPCET to be announced later. So अभी तक इनका कुछ भी मतलब सर्कुलर वगैरह Date नहीं नहीं आया आया है, है. like when will be the exam going to happen. But you have to keep yourself updated with the official website. Don't go for the other websites like shiksha.com or career 360. हाँ. There will be misleading concepts on that website and they will not keep you updated. So जो भी यूनिवर्सिटीज को आप like opt करना चाहते हो या कॉलेजेस को करना चाहते हो, you have for MUHS or the PGPCET you have to go for the this ctcell.mahacet.org. And for the other universities out of Maharashtra or deemed universities, on the official website only you have to be like that will be your trusting source. And don't go for the other Third party. websites or other thing. I just wanted to add one point regarding the OTPT registration for the MUHS. It is not compulsory for the other universities, but for MUHS OTPT registration is very very important. So ऐसा बहुत बार देखा है मैंने, मतलब मेरे फ्रेंड्स के साथ भी हुआ है, that if you don't have OTPT registration at the time of admission, so जब आप मतलब कोई भी कॉलेज में ऑप्ट करते हो, every week you will be charged some amount till you get the OTPT registration number. So आपका ये like this will be your like homework for this before exam. You should have your OTPT registration done, and you should at least have the number, that is OTPT number. Application number भी चले. Yes, It should be. ये तो होना ही चाहिए आपके पास, so that you have like you don't have to follow the fees or anything charges extra that will be charged for you. And third thing is the WhatsApp groups.
what I suggest is there are a lot of you and everyone has a different college or field to apply. So for Right. example कि आप में से किसी एक ने, for example ऐश्वर्या को अगर जाना है मणिपाल में, तो she will visit the Manipal website, she will take all the details, वो brochure पढ़ेगी and then make a group or a community. Even we have the Physio Academy group whereby जिसने Yes. जो research किया है you put it up on that group. It will be helpful for other students as well. कोई और अगर मणिपाल का जाना चाहता है, ज्वाइन करना चाहता है, तो उसके पास वो इन्फॉर्मेशन रहेगी. एंड आप 10 जन जो हो, आप अलग अलग इंफॉर्मेशन डालोगे तो सबके पास सारा इंफॉर्मेशन होगा. तो यू कैन क्रिएट अ कम्युनिटी वेर बाय यू कैन शेयर वट एवर इन्फॉर्मेशन, एग्जाम डेट्स हो, फॉर्म कब निकला है, सर्क्यूलर क्या है, सिलेबस क्या है, ये सारा चीज आपको उस एक जगह पे मिल जाएगा. तो यू कैन Right. इनकॉर्पोरेट दिस हैबिट टू बी अपडेटेड वट एवर इट इज, एंड वो इन्फॉर्मेशन ऑथेंटिक रहेगी बिकॉज वो ऑफिशियल वेबसाइट से ली गई है. सो दैट विल Right. हेल्प एवरी वन ऑफ यू. Yes. सेकेंड थिंग इज काफी जनों ने इन स्पेसिफिक यूनिवर्सिटीज के बारे में इंक्वायरी करी थी. तो फर्स्ट थिंग इज एमयूएचएस. एमयूएचएस जो है आपका महाराष्ट्र यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, उसके अंडर कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं और कुछ प्राइवेट कॉलेजेस हैं जिनका एडमिशन हैपेंस थ्रू योर पीजीपीसीईटी, जिसका हमने अभी डिस्कस करा. बट सम अदर डीम्ड यूनिवर्सिटीज है, मणिपाल है, केएलई है, डीवाई पाटिल है, कृष्णा कराड है, इन सबका खुद का एग्जाम्स होता है. ऑल द यूनिवर्सिटीज हैव देयर ओन सेट ऑफ एग्जाम्स. Now, KLE Institute this year did not conduct any exams. The admission was done on the basis of your 4 years का marks aggregate. Some of you, if you want to enroll in the universities of the south, तो जैसे हमारा MUHS है, वैसे उनका RGUHS है, that is your राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज. उनका भी एडमिशन ऐसे ही होता है बेस्ड ऑन योर मार्क्स. तो आप कौन से कॉलेज में जा रहे हो, वहां पे आप देखो कि आपका एग्जाम के थ्रू एडमिशन हो रहा है या आपका यूजी के मार्क्स के थ्रू एडमिशन हो रहा है. Some of the tentative dates which have come up, we have put up here. जैसे मणिपाल का एग्जाम जून में है, उनका टेंटेटिव डेट आया हुआ है. कृष्णा कराड का it is by this month end, which is May. And CET का dates have not come up yet, but past few years it has been happening sometime around September, I guess. September. Yes. Yeah, September. September. So you should start preparing for now. जो आपके undergraduate students है, I think you can start preparing in your internship. So in and around 3 to 4 months is a very good time to prepare for your exam. सबको तब से शुरू कर देना चाहिए. इट डिपेंड्स कि आपका एम क्या है. So, we like when we were preparing for our exams, like जब लोग हम अपने लेवल पे प्रिपेयर कर रहे थे फॉर मास्टर्स एंड पीजीपी सीईटी, सो एट दैट टाइम वी वर लाइक कि हम लोग को कोई गाइडेंस करने वाला है नहीं. एंड व्हेन वी हैव लाइक सर्च फॉर अदर गाइडेंस लाइक कोचिंग इंस्टीट्यूट्स, सो दे वर वेरी एक्सपेंसिव. एंड मतलब हम लोगों को ऐसा लगा कि हमको जीरो से सब कुछ सिखाने की जरूरत है ही नहीं. हम लोग ने 4 इयर्स वैसे भी हम लोग ने सीख लिया है जो सीखना था. तो अभी हमको वापस लेक्चर्स 0 to 1 लेके सिखाने की जरूरत नहीं. एंड वी हैव व्हेन वी हैव कंप्लीटेड द एग्जाम्स, देन वी केम टू नो दैट कि MCQs are the main important thing, and how to solve them, how to find their like our pattern, like हम कहाँ पे गलत हो रहे हैं, वो पैटर्न समझ के लेना और उस पे काम करना, ये ज्यादा इम्पोर्टेंट है rather than going for lectures or concept clearance. So MCQ and test series plays an important role, and for which we have decided or we have come up with this Physio Academy. We have official website that is given, and the official like Instagram account also, you सोशल can मीडिया follow हैंडल. it. Yes, and we have our physio community on the WhatsApp group. If you want to join, we will put that group का link in the like PG entrance exam prep वाला जो WhatsApp group है, उसमें भी हम लोग डाल देंगे. You can also join that group. वहाँ पे हम लोग ऐसा कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जहाँ पे लोग मतलब कुछ भी, अगर आपको पीडीएफ भी चाहिए किसी बुक का, यू कैन आस्क फॉर इट. You can put any X-ray on it. You can ask like everyone. We also will help यू you. कैन ऑल्सो Other पुट physio. एमसीक्यूज जिसमें आपको कंफ्यूजन Yes. है कि इसका आंसर क्या होना चाहिए. वील हेल्प यू आउट. वील ऑल्सो कि क्या पॉसिबल ऑप्शंस है, उसमें से सही आंसर क्या है और बाकी के आंसर्स क्यों गलत है. एवरीथिंग हाँ. व्हाटएवर इज योर डाउट्स, यू कैन जस्ट पोस्ट इट ऑन द ग्रुप एंड वी ट्राई टू हेल्प यू आउट देयर.